हेलो फ्रेंड्स, आइए करते हैं केमिस्ट्री को आसान। तो आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि एक टाइप के अट्रैक्शन फोर्स है उसकी बात करने वाले हैं और वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड समझने के लिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। व्हाट, व्हाई, हाउ एंड वेयर। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर इसको समझे उसके बाद हम ये समझे कि व्हाई इट इज फॉर्म, then we will understand how it is formed and where it is formed. Then our all ideas behind it we can use in development of chemistry and its problem solving process. So let us understand what is hydrogen bond. Hydrogen bond is merely an attraction between hydrogen atom and few elements which are smaller elements and electronegative elements, lone pairs. Okay, now let us understand what is. So if I want to write something about what is hydrogen bond, I will write it is an attraction force. It is an attraction force between number one, hydrogen atom, and number two, lone pair of NFO, or sometime it can be written FON. तो ये क्या चीज़ है FON एंड NFO? लेट अस अंडरस्टैंड। पहले तो ये क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स है जो लगता है हाइड्रोजन एटम के और एक लोन पेयर के बीच में। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंड लोन पेयर होने के लोन पेयर इज अ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एन एटम। तो एटम के ऊपर जो लोन पेयर होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड ये NFO का मतलब है नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। या तो कभी इजीली याद करने के लिए हम फोन को याद कर सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो इट इज़ अ सिंपल अट्रैक्शन। ओके, एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ फॉर्म। सबसे पहले हमें पता है कि दिस हाइड्रोजन एटम is positively charged or it has a proton we sometime call. Okay, lone pair is a negatively charged, and we also know that these two will always attract to each other. ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दोनों को। अच्छा, ये कैसे फॉर्म होता है, वाई? तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव है, लोन पेयर नेगेटिव है, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है और वो अट्रैक्ट होके वहाँ पे लग जाते हैं। बट द थिंग इज दैट कि वाई ओनली दिस एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? वाई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन, other electronegative elements like sulfur, like bromine, like iodine are not involved in formation of this hydrogen bond. So our Y is not for this, Y is for other elements, those who are not taking part in the bond formation. जो elements होते हैं like chlorine, sulfur, they are bigger in size. So bigger the size होता है तो element का जो lone pair होता है that is also diffuse lone pair. It is not a like concentrated lone pair. So हमें चाहिए कि उनमें से एलिमेंट्स, स्मॉलर एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करें। अगर हम बात करें 15th ग्रुप की, 16th ग्रुप की और 17th ग्रुप की, तो 15th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, 16th में ऑक्सीजन एंड 17th में फ्लोरीन। वी नो अक्रॉस द पीरियड साइज ऑफ एटम गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो सबसे छोटा एलिमेंट है फ्लोरीन, सो वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, और उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन। साइज के अकॉर्डिंगली फ्लोरीन इज स्मॉलर, देन ऑक्सीजन इज बिगर, नाइट्रोजन इज स्टिल बिगर। तो इन सबके पास जो लोन पेयर रहेंगे दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ओवर द एटम एंड दे कैन टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। सो फ्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर रहता है दैट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन। हमें ध्यान इतना रखना है कि वो एटम छोटा होना चाहिए और वो एटम 15, 16, 17 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट इसलिए है
क्योंकि वो छोटे हैं और सबसे छोटे अपने ग्रुप में हैं, एंड वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना. ओके, now let us understand how it is formed. Okay, so we will understand it is a simple attraction force. Let us take example of water. In the water molecule over the oxygen, there are two lone pairs are present. Lone pair and lone pair. This is bond pair, this is bond pair. And now you can see there कि let us understand another water molecule like H, O and H. Now this hydrogen and this lone pair has an attraction force, and therefore they will come close to each other and they stay together because a kind of attraction force exists. मैं ये आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बाकी सारे वीक अट्रैक्शन फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग है. ओके, लाइक वैन डर वाल्स फोर्सेस की बात करें तो they are the weaker than the hydrogen bond. Hydrogen bond is stronger than other three forces like dispersion forces, dipole induced dipole forces and dipole dipole forces. तो इस तरीके का जो अट्रैक्शन देखने मिल रहा है इन दोनों के बीच में, ऑक्सीजन की लोन पेयर में और इस हाइड्रोजन के बीच में, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. रिमेंबर, यहाँ पे सिर्फ वही हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि जो FON से कनेक्टेड हो, माने कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो. वो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कि जो कार्बन से या तो किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो. तो वी शुड बी केयरफुल कि हमें हाइड्रोजन एटम का अगर सिलेक्शन करना पड़े तो हम वैसा ही हाइड्रोजन एटम सिलेक्ट करेंगे जो कि इन तीनों में से किसी एक के साथ सिस्टम में कनेक्टेड हो, एंड देयरफॉर दे विल हैव अट्रैक्शन. व्हाट आई वांट टू कन्वे, that is remember, like this oxygen cannot form hydrogen bond with this hydrogen. This is not possible. ये possible नहीं है because this hydrogen is connected to carbon which is electropositive element, and therefore यहाँ पे वो attraction नहीं बनेगा, and this is not possible. but definitely हमें ये सोचना है कि हमारे पास हाइड्रोजन होना चाहिए और वो हाइड्रोजन ऐसा होना चाहिए कि जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो. ओके, सो दिस इज हमारा हाउ हो गया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वेयर इट इज फॉर्म. सो वी हैव मेनी एग्जांपल्स यूजिंग दिस थ्री एलिमेंट्स. लेट अस अंडरस्टैंड वन एग्जांपल ऑफ it by taking example of NH3 ammonia. Ammonia is a trigonal pyramidal shape. This is a lone pair, and similarly let us take example of water. So this lone pair, you can see that lone pair can form hydrogen bond with this hydrogen. It is possible because this hydrogen is connected to electronegative nitrogen atom, and nitrogen atom is a electronegative that we already discussed. Similarly, this lone pair can form hydrogen bond with this hydrogen. So ammonia and water, they can form hydrogen bond, and they are easily, like we know that ammonia is highly soluble in water. So this is what happens in the system. Another example, you can take water and water where hydrogen bond is formed, and everywhere in system there are many ways we can see hydrogen bonds are forming. Let us take an example of hydrofluoric acid, where you can see that this fluorine has a lone pairs and that has an attraction to this hydrogen. Hydrogen bond is shown by this dashed line, and therefore we are showing like this. Similarly, you can take more examples, like let us take an organic compound example like alcohol. Now alcohol forms H bond like this, lone pair and hydrogen. You can take example of phenol. Now this is phenol where this oxygen has a lone pair. Similarly, another phenol where pair and this hydrogen will form hydrogen bond. So this is the way we can show that hydrogen bond is formed. So in short, what is hydrogen bond? It is an attraction force between hydrogen atom and lone pair of which element? FON. याद कैसे करेंगे हम? FON. F का मतलब होता है फ्लोरीन.
O का मतलब होता है ऑक्सीजन, N का मतलब होता है नाइट्रोजन. ओके, दिस इज अ डेफिनेशन. What is, why it is formed? Because hydrogen we consider positively charged element, electropositive element, and lone pair we consider negative charge, electronegative species. So they too will attract to each other, and that is why they form this kind of attraction force. Now, wow, how it is formed, you can see that water molecule lone pair and hydrogen atom of the connected oxygen atom can form an attraction force, and that is called as hydrogen bond. It cannot form between oxygen lone pair and hydrogen of the carbon, because carbon is electropositive element, so it is not formed. And where it is formed, we can see several examples: ammonia, water, hydrofluoric acid, ethanol and water, phenol and phenol, and there are many more examples you can take. Interestingly, our DNA, that is DNA, deoxyribonucleic acid, has many hydrogen bomb form. So if you study detail biology part and chemistry of that particular biochemistry sequence, DNA, you will find many interesting facts regarding hydrogen bond. Due to hydrogen bond, water is in liquid state. Remember, due to hydrogen bond, water is in liquid state. चलिए करते हैं केमिस्ट्री को आसान.